हेलो गाइस, दिस इज आर्यन गेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राइडे की गेंशिन की लाइव स्ट्रीमिंग। यो सेंसे भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम भाई। Every ये क्या कलेक्ट कर लिए? day. Don't rush. क्या हाल चाल? फर्स्ट पहले पे सामने है 2 3 4 नंबर। बर्फ पे जाना पड़ेगा। मैं बढ़िया, आप भाई आप बताओ। बस भाई चल रहा है। कब जाके स्टार रेल गेम लॉन्च करेगा यही सोच रहे हैं। But we don't want you catching a कतई cold. दिन धीरे धीरे चल रहा है भाई। I see everything. जब भी कुछ हो नया ट्राई करने के सोचते हैं तभी वक्त नहीं गुजरता भाई। हाइपर ब्लूम बेस्ट है मेरे नज़रों में। कतई 1 लाख पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट। ओके, आज भी पहले राज भाई की आईडी से। राज भाई के मोबाइल आते आते नेक्स्ट वेडनेसडे ना। उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन एट लास्ट, बहुत दिनों बाद। Our bond is strong. भाई इनके नाहिदा मारती है भाई। No, my sword. मजा आता है पब्लिक में। भाई मैंने काजुआ का बिल्ड बनाया है, देखो जरा, कुकी पे लगाया है अभी। ओके भाई, काजुआ आईडी शेयर करना सेंसे भाई। क्योंकि हमारे राज भाई की आईडी है, यहाँ से मिलेगा नहीं आईडी, बाकी मुझे याद नहीं भाई। हेलो राज भाई, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम भाई। ठीक लिखे यहाँ तक 56327। ओके, कुकी के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है भाई, चल जाएगा ओपन। बहुत ही बढ़िया ओपन है। 56 बड़ा एनर्जी रिचार्ज है, ये भी चल जाएगा। एलिमेंटल मास्टरी, एलिमेंटल मास्टरी, एलिमेंटल मास्टरी। ओपन को आप और बढ़ाओगे तो टोटल अभी बोल देते हैं 165 ना, तो और 10 के आसपास बढ़ेगा। 825 के अराउंड। काजुआ से आपको कुछ मिलेगा। काजुआ एसेंट करने पे एलिमेंटल मास्टरी बढ़ता है 900 के आसपास। क्यों 900 के आसपास? क्योंकि यहाँ पर कम एलिमेंटल मास्टरी बढ़ा है, पर चल जाएगा भाई। 16% एनर्जी रिचार्ज, टोटल एनर्जी रिचार्ज कितने? 140। चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया है भाई। अगर कुकी के ऊपर 140 है तो काजुआ के ऊपर भी वो ऐसा ही कुछ रहेगा। और ओपन से भाई जल्दी से एनर्जी रिचार्ज भी होता है। कब मिलेगा मुझे ये ओपन क्या पता। 965 के आसपास, हाँ वो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी भी इतने पे बिल्ड तो नहीं किए। ओके, एक 1 टाइम और बढ़ेगा। चलो, अगर एलिमेंटल मास्टरी बढ़ गया तो बहुत ही बढ़िया होगा। 187 187 187 ना, 56 और यहाँ से 44 चल जाएगा भाई। बहुत ही बढ़िया बिल्ड है जैसा भी है। तुम्हारे पे क्या हालचाल काजुआ पे? इसको किसने ऐसे कांड कर दिए? ओके, इसको तुमने ही ऐसे कांड किए थे ना, सुक्रोज बनाने के चक्कर में। सुक्रोज बनाने के चक्कर में ये कांड हुए। यहाँ पर क्या था काजुआ के पास? सुक्रोज के। ठीक ठीक 953 नहीं भाई, तुमसे कम होगा क्योंकि तुम्हारे इस पे 82 बड़ा है।
राज भाई, सेंसे भाई के वो ठीक ही बोले हम, 965 नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ पर 82 बढ़ा है, उनके वहाँ पर कम बढ़ा है। तुम्हारे यहाँ पर 61 बढ़ा है, वहाँ पर 44 है, और एक लेवल बढ़ा तो 61 ही होगा मैक्सिमम, मतलब वो 60 के आसपास। तो फिर भी उनका ये आपसे 20 कम है, तो 20 के आसपास कम होगा। टोटल 130 EM ऐड हो रहा है। ओके, वैसे सेंसे भाई आप नाहिदा खोले, अगर खोले हो तो नाहिदा को के साथ साथ कुकी को भी ठीक से EM पे बिल्ड कर लेना भाई। जैसे कि मैं अभी राज भाई के आईडी से पैराडाइज लॉस्ट पे ढूंढे जा रहा हूँ, अभी के लिए चल जाएगा, नहीं चलेगा क्योंकि अभी भी 2 पीस चाहिए मुझे। नाहिदा है मेरे पास, रिलीज पे ही निकाल लिए थे, बढ़िया है भाई। एजी भाई यो, आई डिड द एबिस ऑन मोबाइल, गजब। तो कैसा लगा मोबाइल पे एबिस करके? मार पड़ी या फोड़ दिए आप? दोनों में से कौन सा? मेरा ऑड ज़्यादा होगा काजुआ पे एसेंड करने के बाद। $982, हाँ तुमसे 20 के अराउंड कम, ठीक ही बोले, 965 के आसपास। फोन का तंदूर बन गया बट इट वाज लाइक डिसअपॉइंटिंग। नया टीम यूज़ करना या काजुआ नाहिदा जोंगली, याही काजुआ नाहिदा जोंगली। तुम वो एग्रेवेट स्प्रेड बोल रहे हो ना, मैं उन चीज़ों का फैन नहीं हूँ भाई। मुझे मज़ा आता है डबल ट्रिपल जो भी है करने में। राज भाई मैं ना सेट चेंज करूँ, मुझे हाइपर ब्लूम पे ही रहने दो, कतई मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। जोंगली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जोंगली है नहीं मेरे पे, बस इतना सा रीज़न है। तुम इलेक्ट्रो का बढ़ा के दिखाना, मतलब ज़्यादा डैमेज, तो समझ गए हम। छोड़ दिए, भाग लो अब। ओके ओके ओके, यहाँ पर कोई है वैसे टीम पे? मैं तो हाथ भी नहीं देता, तुम जैसे सेट करके रखते हो वही चलता है, इस पे हाथ नहीं देंगे। बस यहाँ पर कौन कौन थे? काजुआ था, बस काजुआ घुसेगा ना, चलो घुसा दे। अरे काजुआ को एसेंड कर लेना नेक्स्ट टाइम। कर लिए। My racing is scrapped. Potential. That's yeah that. उसके बाद that's boom boom. काहे के boom boom? काजुआ boom boom टाइप नहीं है। Time to go. I got a jar of dirt. I got a jar of dirt. कल का आपका केक पार्टी कैसा रहा? Right now. One with nature. Right here. Right now. कम से कम मार तो लेने देते मुझे। कुछ करने से पहले ही एनिमी खत्म हो जाते हैं। ऑल कंप्लीट नहीं, ऑल कंप्लीट ये नहीं कहेंगे, अभी भी कांड करने बाकी है। 4 बजे तक मस्ती कर रहे थे, पुराने मेमोरी से याद ना दिलाओ। ये कौन से पुराने मेमोरी से है? बूम बूम।
या जार वाली है कुछ पुरानी मेमोरी। Time to go. Ad Astra. गजब, तब सोए कब जाके और उठे कब और घूमने का क्या हुआ? Ad Astra Abyss. Thank you for याद आया कहाँ पर जाना है। पहले है यहाँ पे। I got a jar of that is Jack Sparrow dialogue. Guess what inside of it? कम से कम मुझे क्वेस्ट मार्किंग कर लेनी चाहिए थी। नो मार्किंग आ गया भाई। गेस करे भाई, मुझे नहीं पता भाई। कैसे कैसे गेस कहते हो, जिसको लेके आइडिया नहीं उसको लेके क्या ही गेस करे। कम से कम तोड़ने तो दे देते। नीचे गिर के टूट गया भाई। No, that's also Jack's line. Okay. भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मूवी देख चुके हो, मैं ही हूँ जो कुछ नहीं देखे अब तक ठीक से। Parley. It's the full thing. I got a jar of dirt. I got a jar of dirt, and guess what is inside of it? Okay भाई, समझे। Solidify! Hey! Emerge. Right now. Into the wind. Clouds high. The birds call. I see everything. Emerge. The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. I see everything. Right here. Right now. आखिरी टाइम, लास्ट टाइम, ठोकी दो सबको। Emerge. Right now. Time to go. Clouds high. The birds call. Hey! A sight to behold. ठोक दिए, पर म्यूजिक दिया आसपास चेस्ट गिरने की। मेरे वाले पे म्यूजिक नहीं दिए थे। I forgot about where is the rum. If I forgot about the parley, I still find the bank scene funny. जैक स्पैरो भैया सब कुछ में ही फनी थे भाई।
बस एक दो साल पहले, एक साल पहले जो बीच में लोचा हो गया वो छोड़ के भाई, वहाँ भी फनी थे, कोर्ट पे भी फनी ही थे भाई। ओ और हमारे आयरन मैन भैया। यू गॉट ए पायरेट एंड ए विच। विच सचमुच की विच है भाई, कहते ही इनका कोई भरोसा नहीं। द वे द बैंक गॉट पुल्ड इन दैट सीन। अरे 2 पुल मारने वाले हैं, कहते जल्दी से दे दो। मुझे लगा आसपास चेस्ट मिला कुछ। घंटा। नेक्स्ट डे 8 बजे। फोर्स्ड मैरिज। तो उनके देशों का पता नहीं भाई, एक के बाद एक शादी चलती रहती है जिंदगी में। शादी कम डिवोर्स से ज्यादा होती है। कोई ना, वो सब छोड़ो, हमारे लिए गेम चले अभी। वही टेस्ट स्टाइल पे आ गया। मूवी की बात कर रहा हो? ओके, मूवी की बात कर रहे हो। मैं सोचा रियल लाइफ की बातें कर रहे हो। मूवी के अंदर क्या एक सीन मुझे देखना है। मैं अब तक एक भी मूवी नहीं देखे जैक स्पैरो की। आई मीन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। आई एम सॉरी, डराना नहीं चाहते थे किसी को। मुझे लगा स्टार्ट हो गया तो ज्यादा माउस क्लिक कर रहे थे। Right here, right now, right here. Everyone hold hands. One with nature. Gather. The wind knows me. As one with wind and cloud. हम वापस आ गए। Emerge, right now. Into the wind. Hey! Stabilize. ओ भाई बहुत सारे हैं एक साथ, पास आओ सब। The wind knows me. Right here, right now, right here. I see everything. Gather. Emerge, right now. Into the wind. Emerge, right here. The wind knows me. Time to go. Everyone hold hands. Order guide you. Stabilize. अब काफी मरे तुमको, ऐसे ही मर जाओ। बस वेस्ट ना करे तुम्हारे ऊपर। और कैसे है सब लोग? यो हर्ष भाई कैसे? मेरे तो यहाँ पर चल रहे हैं बस कुछ कांड करने की कोशिश।
बस अब जितनी जल्दी हो जाए। अगर एक 4 स्टार मिल गया तो बढ़िया होगा भाई, तब एक पुल कर पाएंगे। और ना ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पहला पुल कुछ नहीं दिया रे, इसलिए ऑनलाइन नहीं आऊँगा। मैं आज बाहर आया हूँ। आप आज बाहर गए हो? ओके भाई, एक कुकी कहते ये तो इजीली देते नहीं ना। 10 पुल हो चुका है कुकी के जाते हुए, ज़्यादा मतलब लैला मिला था ना, मिली थी आई थिंक। हाँ तो 5 1 6 और अभी किए 2 8 और 3 पुल पहले ना दे। चलो कोई ना, और 90 मिल गया तो कल आते ही एक पुल कर पाएंगे। तुम्हारी इन मैपों की हालत, ये 100% कर दिए, फिर भी यहाँ पर चेस्ट है अभी भी। मुझे पता है तुम सारे नहीं मिले तुमको, यहाँ पर कुछ मिलेंगे मे बी। कैरेक्टर बैनर 40 पीटी नाउ ओपन बैनर 30 पीटी। काजुआ लवर कैसे हो? बस भाई चल रहा है, बढ़िया है। आप बोलिए कैसे है? बाय द वे वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। किसके लिए विश कर रहे हो? राज भाई को कुकी चाहिए। नाहिदा निकल गई तो भी चलेगा, हार जाते हैं तो भी चलेगा। जितना कि मैंने सुना तो कुछ भी चल जाएगा उनको, जो भी हो उनको लगता है कि मतलब ठीक ही है, चल जाएगा, बढ़िया है। अब मैं चला फिर से अपना हाइपर ब्लूम। क्योंकि हाइपर ब्लूम में मज़ा ज़्यादा आता है मुझे, कहीं किया जाए। बहुत पैसा है, एकदम बहुत पैसा है। फिर से कहे तो एक नेक्स्ट टाइम 180 दिन के लिए मार लेंगे। क्या कहता है वेलकिन? कुकी के लिए विशिंग चल रही है, और सिर्फ कुकी के लिए? मुझे लगा नाहिदा C2 के लिए विशिंग चल रही है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर राज ऑल्सो। आर्यन ये आई वाला टीम का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बढ़िया है भाई। देखो मैं ये नहीं कह रहा, किसी टीम को बुरा नहीं कह रहा, मैं खुद प्रेफर भाई, तुमको पता है हाइपर ब्लूम करता फिरता हूँ मैं। मेरे लिए हाइपर ब्लूम ही ठीक है भाई, मज़ा आता है। बस लॉक ठोक दो, डैमेज अपने आप पड़ती है भाई, ज़्यादा कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। I will have order. Gather. Our bond is strong. Ring cutter. ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ता है, ऐसे ही काम हो जाते हैं। वे ऑल लाइक काजुआ नॉट वेंटी इज आर्कॉन टीम परफॉर्मेंस। आर्यन एकदम भाई, उसके मतलब तुम जो उस टीम के कहे, हाँ भाई बढ़िया लगा भाई। ओ याई के साथ भी बढ़िया चल जाता है, वहाँ पर तुम बेनेट को भी घुसा सकते हो अगर जंगली ना हो तो। और टीम यूज़ कर चुके हैं भाई। अरे जो जिस सेट पे चाहिए उस सेट के दो ना यार, काहे मतलब इस पे है ही नहीं कोई साओ, या मेरे जैसे हाल है भाई, ना साओ है ना वंडरर है, फिर भी हमें एनिमो वाले दिए जा रहे हो। गलत ही दो, पर पैराडाइज पे दो। अब काजुआ भाई, आई लाइक नाहिदा, आई लाइक काजुआ। नाहिदा को हम लोग छुटकी कहते हैं। Solidify. अभी पानी वाले पैर मार देंगे। Outlines your fate. Witness the power of Gugwa. I see everything. किसको कहाँ से कैसे हाइपर ब्लूम होता है कुछ समझ नहीं आते, पर होता जब है तब मजा आता है। Our bond is strong. Commit it to memory. This is order. Gather. Take.
कहाँ लड़ोगे मुन्ना? यहाँ पर एक हाइपर ब्लूम, हाइपर ब्लूम, हाइपर ब्लूम। आई को नाहिदा पर्सनालिटी, हाँ नाहिदा की पर्सनालिटी कुछ बड़ी बड़ी जैसी है। आई कॉल हर बालक स्लैश चाइल्ड। बालक, पर ये तो बालिका है, बालक काहे कहते हो? फ्लिंट ने किया नहीं पुल वाला, फ्लिंट भाई ने कुछ नहीं किए, कतई का दे दिए। मांगे भाई गॉबलेट पे दे देते, कांट कंप्लीट थी, कांट कंप्लीट थी ना, तब वो जो भी है फेदर लगा देते। कांट हमारे कंप्लीट थे, गॉबलेट पे ईएम, गॉबलेट पे ईएम कह के घूम रहे हैं। कब से घूमे जा रहे हैं भाई? I see everything. Time to act. No, my sword. Our bond is strong. Let me weave you a verse. Solidify. Hey. Yeah. Stabilize. Dissipate. Rain outlines your fate. Everyone hold hands. Rain cutter. Time to act. हाइपर ब्लूम के ऐसे मार पड़ जाएंगे, तुम उठने के नाम पे खत्म हो जाओगे। थर्ड टाइम दो है मेरे पे इस वाले को लेके। मैं मुंबई में बड़ा हूँ, सो माई लैंग्वेज इज मिक्स ऑफ हिंदी एंड मराठी। कोई ना चलेगा, चलो अच्छा दिए, अच्छा दिए। बस एलिमेंटल मास्टरी दोनों पे, अगर एलिमेंटल मास्टरी ऐड हो जाती है तो चल जाएगा। दोनों को लेवल 4 करना पड़ेगा। मैंने आज खुद के आईडी में रेसी न्यूज़ नहीं किए। हेलो फ्लिंट भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम भाई। कोई ना कोई ना, I see everything. No, my sword. Stand with me. Everyone hold hands. हाँ मारते हैं, रुको। Let me weave you a verse. अबे तुम लोग उड़ काहे जाते हो रे? Solidify. Hey, कुछ ना करने पे ही ऊपर चले जाते हो। dissipate. बस इतने सारे एक्टिवेशन करने पड़ते हैं, भूल जाते हैं क्या क्या है मेरे पे, क्या क्या नहीं है मेरे पे। I see everything. Rain outlines your fate. Huh? हाइपर ब्लूम का मजा ही अलग है, वो अपने लेवल पे है भाई। कोई नहीं सेंस से कर दूंगा जब टाइम मिलेगा तो। इफ़ यू वांट गुड आर्टिफैक्ट यू कैन हैव माय आर्टिफिशियल रिचुअल एंड बंदी सैंडी आर्टिफैक्ट नाम ना मिले तो मिहोयो वाले, समझ जाओ। ओ भाई का दिए, एचपी दिए नहीं चलेगा, ये भी गलत सा। बढ़िया है, बुरा नहीं है। अगर क्रिट डैमेज ऐड होता है तो आर्टिफैक्ट बुरा नहीं होगा। समझ गए समझ गए। अब जो मिले हैं उनमें से देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा इस पे कि ऐड होता है नहीं। ऐसे ही अपग्रेड होना हमेशा 2x से। अभी 1x पे, अब यहाँ पर काहे 2x लगा दिए, नहीं चलेगा। और इस पे था ना 12 लेवल किए अभी तक, इस पे अगर ऐड होता है तो बढ़िया है, वरना भगा देंगे इसको, क्योंकि उस वाले पे कुछ बड़ा नहीं है ईएम। हाँ ऐसे 2x करके
नहीं चलेगा, दोनों को भगाना पड़ेगा, समझ गए। किसी को मैक्स करने के पीछे दौड़ रहे थे उस दिन, आयत के पास है। कंप्लीट, बढ़िया है भाई, जैसा भी बड़ा है बढ़िया ही है तुम्हारे ये आर्टिफैक्ट, कतई बहुत ही बढ़िया आर्टिफैक्ट है। 9.3 20% चल जाएगा, दोनों साइड से ही बढ़िया है भाई। आयत वाला सैंड वो HP पे मिला था ना उस दिन, जिस पे सिर्फ डैमेज बढ़ा था। एक रोल लग गया था कल एलिमेंटल मास्टरी पे, बाकी यहाँ पर पड़े हुए थे, तो ये लास्ट टाइम का रोल 9.3 क्रिट रेट पे लगा, तो बढ़िया ही है भाई, चल जाएगा। अभी इसको देखना पड़ेगा, अभी जब तक ना मिले तब तक इसको लेके चलाना पड़ेगा। पूरे सेट होने के अपने फायदे हैं भाई। अब 2x का जादू चलाओ यार, जब जादू चाहिए होता है तब देते नहीं, बाकियों को सेल कर देना पड़ेगा। बे जूम हटाओ रे। चलो डिफेंस में एक भी नहीं आया, डिफेंस पे जाता भी नहीं भाई, डिफेंस पे जाता भी नहीं। It's a nice day, but I can't seem to shake. अब जो करने वाले हैं वो है क्रायोर पे। तो 1 2 3 4 5 EM चाहिए। चल भाई, उस वाले को देखते जो मिला लास्ट पे, इसको रख देते अभी के लिए, बाद में देख लेंगे भाई। पहले तो EM खड़ा कर दे। ओ इस EM वाले को भी छोड़ दिए भाई। EM रेयर पीस है, रख दो। अरे सैंड पे EM रेयर नहीं है भाई, गॉबलेट पे बहुत ही रेयर, सर्कलेट पे मीडियम कह सकते हो। सैंड मिला काहे भाई, क्रिट रेट डैमेज काहे नहीं देते, नहीं चलेगा, दोनों ही नहीं चलेंगे। हाँ, लास्ट 3 भाई सैंड क्रिट डैमेज के साथ। गलत से चीज दे दी है। फोर्थ स्टैट पे CD मिल जाए, हाँ भाई वो भी चल जाएगा। फोर्थ स्टैट पे अगर CD, अरे उस पे कुछ ना मिला आपको, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, उनको अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं भाई। उससे बढ़िया है तुम बाद में इसको, अरे काहे गलत जगह चलाया था उससे बढ़िया है तुम बाद में इसको अपग्रेड करके देख लेना। अगर CD घुस जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। सेम वाला पीस है कहाँ पर है? तो और तो कुछ करने लायक है नहीं भाई, सब कुछ कर दिए। अब ID स्विच कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक कर दे, हो जाएगा भाई। EM सैंड मेरे पे है, हाँ आप पे है सेमिच। हाँ तो EM के सैंड मिल जाते हैं भाई, वो तो पहले ही बोले। पर पैराडाइज लॉस्ट जो सेट है वो बहुत के ऊपर चल जाता है, तो रखना बेटर है भाई, ऐसा मुझे भी लगता है। पैराडाइज सिर्फ हाइपर ब्लूम के लिए तो नहीं, वर्जियन के लिए भी कम कट जाए भाई। सही से लिखे ना, कुछ गलत से ना लिख दिए। ओके चलो, मेरे पे 12 EM सैंड है परसेंटेज। मेरे पे ज़्यादा सैंड नहीं है, सबसे कम है जो गॉबलेट। न्यू डोमेन करना है, हेल्प चाहिए थोड़ा भाई। कब मैसेज किए? अभी मैसेज किए, अभी मैसेज किए, फिर निकल भी लिए। गजब भाई। ओके भाई, मेरा नेटवर्क आज भी मिला कुछ यूज़फुल ब्लिज़र्ड से। क्या क्या मिला ब्लिज़र्ड से? कुछ भी यूज़फुल नहीं मिला।
जब मिलेगा तब जरूर अपग्रेड करेंगे। अभी तक ना कुछ मिला भाई। जो मिला था वो यूजलेस था भाई। ये क्या कांड हुआ? अनदर मॉडरेटर, मेरे आईडी पे मॉडरेटर? कोई मॉडरेटर नहीं, सिर्फ मैं अकेला चलाता हूँ भाई। ज़्यादा करोगे मॉडरेटर चीज़ें बंद कर देंगे। अरे फ्लोरा, हर दिन की तरह। कस्टमर केयर पे कॉल किया तो बोल रहा है बोलता क्या 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 ये क्या लिखे हो समझ ही नहीं आ रहा है। हाई एफ करो, इस प्रॉब्लम के लिए ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहेगा। ये लोग सेम ही कांड करते हैं। जब मेरा वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा था तो उनको फ़ोन किए थे, कहते गलत से रिप्लाई दे रहे थे। पता था इनको कुछ होता नहीं। भाई अपलोडिंग स्पीड बहुत गिर गई थी तो लाइव स्ट्रीम बंद हो गया था, तो तब किए थे कॉल। तो इनका कहना है कि इनका मतलब सिर्फ डाउनलोडिंग जितना कहते हैं वो तो आपको मिल रहा है, उसी पे खुश रहो। अपलोडिंग कब कहे कि हम लोग अच्छे से देंगे। तो अगर डाउनलोडिंग तुम कहोगे कि 100 MBPS या कुछ भी 50 MBPS जो भी है, तो अपलोडिंग भी तो सेमी लोग सोचेंगे ना। एक कब काहे का रूल हो गया कि ये देंगे आधा नहीं देंगे। तो इनका कोई भरोसा नहीं भाई। मरो सालो मरो। मैं धीरे धीरे एनिमो से हाइड्रोमेन बनता जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर अब हाइड्रो बन चुके हैं। पूरे मारने की भी जरूरत नहीं। एक ही मिला। ये तुम पे आखिर में आएंगे। अब आसपास घूम लेते हैं। कल घर जाके आना पड़ेगा। आप मुझे लगा आप पूरे मतलब लंबी टूर के लिए निकले, घर जाके आना पड़ेगा। ये क्या हो गया? गजब का दे दिए। चलेगा, जो भी है चल जाएगा, मुझे क्या। जब तक एलन है साथ तब तक नीड फॉर स्पीड रूल। काश एलन का बस्ट होता, अरे ई स्किल होता, कोई ना। इसीलिए तो 2 हाइड्रो कैरेक्टर। आई एम सॉरी, गलती से। ठीक है। अब लोगे और पंगा नाहिदा से। ओके क्रायो टीम। हर चीज के है भाई। हाइपर बूम किसी भी टीम को ठोक दे भाई। सबसे पहले तो इन्हें पकड़ा जाए। चलो कंप्लीट है। काजुआ से ये चैलेंज सबसे इजी है। हाँ काजुआ से तो है भाई। अरे भाई यहाँ पर काहे आ दिए? पहले आसपास वाले, सामने वाले कंप्लीट। आज सोच रहे हैं कि
सांगलिंग के स्किल को देखते हैं, अगर 12 लेवल कर पाते हैं तो 12 करके छोड़ दे या 13 लेवल करने की कोशिश करे। 12 ही ठीक है भाई। ज़्यादा टीमों पे तो सांगलिंग नहीं यूज़ नहीं करने वाले जब तक हुता हुआ है भाई। हुता ना होती तो अलग बात थी भाई। Everyone hold hands. कितने कम डैमेज नॉर्मली। I see everything. Get with me. Cascade. और जो भी है उठा लो भाई, मटेरियल जो भी मिले उठा लो। फ्लोरा का कमीशन पता है तुम? फ्लावर वाले के एक हिडन रूट भी कर सकते हो। हिडन रूट क्या, उसको तोड़ देना? जो एक पड़ी रहती है उसको तोड़ देना, वही ना? वही तो है हिडन रूट। मिशन फेल्ड टाइप ऐसा कुछ, पर मिशन फेल्ड तो यहाँ पर होता नहीं। Everyone hold hands. Our bond is strong. अरे मुन्ना, तुम में वो दम नहीं। Busted. Gutsy. Hey, हर किसी को फोड़ चुके, अब सारे उठा के भग लो। अब जब फ्लावर रिसीव करते हो वहां पर, हाँ भाई ओ गलती से एक बार मैं मतलब तोड़ दिए थे बेनेट लेके, तब जाके पता चला कि वो हिडन है भाई, पर उससे पैसा कम मिलता है भाई। साला मिल के मेरा ही घर मिला ना मिलाना था क्या? अरे आपके घर में क्या हो गया भाई? Ad Astra. ए जी भाई, Thank you for complete. वैसे कितने चाहिए होंगे? बहुत चाहिए होंगे। ओके, ड्रैगन को भी पेलना है ना? सिर्फ 12 बुक्स कलेक्ट हो जाए वही बहुत है। ड्रैगन को कल पेल देंगे। कैसा डोमेन है? गजब के है भाई, याद आ गया। दोस्तों ने अटैक किया होगा, समझ गए भाई। यही तो दोस्तों का मजा है भाई। घुस जाओ दोस्तों के घर में। Everyone hold hands. मार पड़ी रे। Quietly now. Things are about to get dicey. नहीं तो मारने का कोई फायदा नहीं मुन्ना लोग, अब मरोगे सब। Get with me. ठीक से रिवॉर्ड दे दे, गलत से कांड ना कर। बहुत दिनों से किसी आईडी को रिव्यू नहीं किए। ओके, मतलब कितने हो गए? 4 पीस, 10 पीस, मतलब 5 पीस। 5 पीस बना सकते हैं अभी। कितने टोटल? हाय, Our bond is strong. Take
Take it easy. Game's up. Fun's over. कति मजेदार टीम है, बहुत ही मजेदार टीम है भाई। टाइटन भाई कैसे है? हाईली अनलाइकली। और क्या ही करोगे एजी भाई, हार मान लो। जो घुस चुके हैं घर में अब। ओके 2 पीस और दे दिए। 14 चलेगा 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 भाई। तो 4 1 5 6 7 ऐसे 2-2 करके देते जाओ, हम कंप्लीट है। टाइटन भाई एक आँख खोल के हेलो भाई कैसे? दो देयर इज नथिंग मच लेफ्ट इन द होम व्हेन आई लेफ्ट। ओ भाई अब उस पर कुछ किया नहीं जा सकता भाई। जो घुस चुके हैं भाई। I see everything. पे 3 हाइपर ब्लूम तो किसी को भी खत्म करते भाई। Stand with me. यही काफी है तुम्हारे लिए। कहते हमें अपने टीम के ऊपर भरोसा है भाई। हाइपर ब्लूम को बहुत भरोसा करते हैं, एक्सेप्ट माय लैपटॉप। उसको बचा के चल रहा। क्या हो गया? उदास इतने गर्मी लग रही है क्या? ओके 18 पीस मतलब 2, 19 पीस मतलब 19 से मतलब के 3 से 1 ना मतलब 9, इसके भी 2 ना ना गलत कहे। 3 ये मिलेगा तो 1 बड़ा बनेगा। यहाँ पर 18 पीस मतलब 6 पीस। 6 और पहले 2 थे 8 8 9 10 पीस हुए। और 1 टाइम किए तो कंप्लीट हो जाएगा। मे बी 12 पीसेस कंप्लीट है। It always hidden in my favorite spot of my house. लैपटॉप हिडन रहती है गजब भाई। I don't think whoever broke in found anything. अरे वो वैसा कुछ नहीं होगा भाई। और अगर चोरों के बात करोगे तो चोर कहीं से भी आ सकता है भाई। इनको कहीं से भी खजाना मिल सकता है। तो टाइटन भाई आप इतने उदास क्यों? ज्यादा गर्मी इस वजह से? चलो एक का काम हो जाएगा, बाकी तो सिंचू है ना एक्स्ट्रा देने के लिए। कतई एक बुक एक्स्ट्रा नहीं देगा, ऐसा कतई ना हो। बहुत हो गया आज के लिए, नॉन ना दे तुमको। बाकी मैं वो एक सेट क्या कहते हैं उसको, आर्टिफैक्ट के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये रहे ना 23 7 लगाए। चलो एक भी एक्स्ट्रा नहीं। अरे भाई गजब भाई। इसको एक्स्ट्रा करने का कोई फायदा तो है नहीं, फिर भी कट दिए 10 पीस। चल जाएगा टोटल, जो भी हो टोटल मैच हो गया भाई। माई लैपटॉप is hidden behind bookshelf which is a little too high for any normal person to reach. The money is in my bank. We don't have anything more than vegetable in the fridge. गजब भाई ना। मेरे सारे पुल हो गया, मैं और पुल ना करूँ।
अब अगर नाहिदा निकल गई तो उल्टा कांड हो जाएगा भाई। वैसे आर्टिफैक्ट तो है नहीं मेरे पे, है तो कतई पहले वाले आर्टिफैक्ट को अपग्रेड कर लो। है का कुछ भी है क्या गरीब के पास? है गरीब के पास? किसने दिए? कब मिला? कैसे मिला? और मिला मिला तो काहे ऐसे मिला? मतलब बाकी भी दे देते, क्या ही ज्यादा खर्चा हो जाता। अब चाहिए है एम्ब्लेम पे ना, नए डोमेन ही चले जाते हैं एक बार। मैं भी तो जाके ले लूँ, कुछ तो ले लूँ, कम से कम कुछ हो तो मिले। सभी के पास कुछ ना कुछ है, मेरे पे कुछ नहीं है इस डोमेन के। बस या सुनते हैं इन लोगों के। मिला कुछ भी नहीं अब तक। नए कांड वाले टीम बनाए थे ना। अगर यहाँ से इलन को हटा के काजुआ को घुसा दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यही ठीक है। ऑल हाइड्रो मर जाएंगे भाई। मेरे पे हाइड्रो पे हिलन नहीं है। मोना तो कतई तैयार नहीं है। और ये लोग मरेंगे नहीं। उसके बाद कल जैसे कोई आया था, कौन था? एरिना भाई, तुम लेट कट रहे हो मारने में, वैसा कांड हो जाएगा। अब आज तो भी नहीं कह पाएंगे कि चलो टीम नहीं लाए। अब क्या तुम लोगों को मारोगे भाई? Out of my way! Here comes the cash. Our bond is strong. Be still. कंप्लीट है। अब तुम इजीली मरोगे भाई, बहुत जल्दी मरोगे, इजीली मरोगे। जो भी कहो, मरना तो पड़ेगा ही। अब मुझे भी नए डोमेन से कुछ मिल जाए। पहली ट्राई पे ही एक हाइड्रो डैमेज बोनस, वो भी सेट पे क्रिट डैमेज 80% के साथ। एक का दिए। सर्कलेट पे कौन अटैक देता है? सेंड पे देते। का दिए। नहीं चलेगा। कहते HP परसेंटेज है यहाँ पर। अगर क्रीट रेट और क्रीट डैमेज HP % होता तो चलता। नहीं चलेगा। क्रायो डैमेज बोनस गलत से दिए। क्रायो डैमेज बोनस यहाँ पर भी दिए। क्या सब दिख रहा है मुझे? और 20 रेसिन है ना, 20 रेसिन बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंगलिंग वाले बॉस को भी तो फोड़ना है, ड्रैगन को। ड्रैगन की क्या हाल चाल? क्या मैं आज 30 रेसिन पे फोड़ सकता हूँ या ज़्यादा चाहिए होंगे? कह रहे हैं फोड़ सकते हो तुम, बस 30 रेसिन लाओ। तो आज अगर 30 रेसिन ला देते हैं तो मैं इसको फोड़ सकता हूँ। तो किसको नहीं फोड़े इस वीक पे? क्या किसी को नहीं फोड़े? कहते चाइल्ड को देख लिया जाए। चाइल्ड खा चुका मैं, अजदहा खा चुका मैं, स्कारा नहीं खाया ना? स्कारा भी खा चुका मैं। ओके 60 रेसिन लेके मानेगा। समझे 60 रेसिन लेके मानेगा। 60 रेसिन इतनी जल्दी ना आए जिंदगी में। मैं कुछ गलत सा ही समझ रहा था। इफ दैट ड्यूड स्टोल द ड्राइंग्स आई थिंक ही रियली हैज ए बैड टेस्ट इन ड्राइंग। ऑल हाइड्रो आयातो बाइजू रिजेंबल द 9th फतुई मेंबर। आया तो फतुई मेंबर। आया तो आपको फतुई मेंबर जैसे लगता है और रिजेंबल करता है उसके साथ। समझ गया। अब आगे बढ़ा जाए। यही था ना स्टोरी क्वेस्ट? स्टोरी क्वेस्ट पे आगे बढ़ा जाए।
हाँ स्टोरी क्वेस्ट पे ही आगे बढ़ा जाए, जगह बाद में भी खोल सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ा जाए भाई। यहाँ की हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है भाई? मैंने तो यहाँ से सब हटा दिए थे पहले ही। पर इस ओके यहाँ पर कुछ तो है भाई, पर कहाँ पर है भाई? गजब के, कैसे हो सकता है भाई? जगह को देख लेना चाहिए। यहाँ पर काहे दिए मुझे ये सब, क्या कहते हैं उनके, ओके सबके कंप्लीट हो रहे हैं स्टोरी क्वेस्ट। There's something that I'm very concerned about. Yes. I didn't mention it just now. वो तो तुम आते ही सब कर दोगे भाई। Do you remember when I told you that the power in the और तो crystal कुछ is दिन very राजू भाई। similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. बस तो स्पीड रन कर देना, सब कंप्लीट है। मैं तो कतई स्पीड रन कर देता हूँ, जब प्रिमोस की जरूरत पड़ती है तब स्पीड रन। I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Mongoloid, Lady Watson. Enemies, you're up, traveler. I see everything. अरे कतई तुम लोग क्या लड़ो? Gotcha. Dissipate. Cascade. अब अगर और मार खानी है तो बोल दो, वो भी है मेरे पे। Amazing. With such skills, you all would have definitely been जियो able का to नेट find a चला way to परसेंटेज, survive the apocalypse. जियो का नेट परसेंटेज वाले, वो भी इमोट, अगर इमोट देने की कोशिश कर रहे हो परसेंटेज से तो गजब का है। Meaning to ask. लोर के लिए सेंसे है जो नहीं पता उनसे पूछ लूंगा। ओके हाँ अब ठीक है। No, वही we सोचे didn't. परसेंटेज का The आ रहे हैं भाई appearance of तब our से। kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you. My Paimon. neighbor check my house। Your कैसे hand पता is चला shaped आपको? like that चाबी for a वो भी दे reason, के गए थे क्या? so you are able to grip and use tools more easily. अगर ना दे गया तो पुलिस केस। The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and अच्छा, fend ओ off तब अलग natural बात है। predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely My neighbor difficult had to the keys, explain. nothing is stolen, but kitchen is a mess। Putting it as simply as possible, changing form requires तब energy. देखना कि उनके घर में भी मैं कह दे रहा हूँ क्या हुआ होगा, उनका गैस खत्म हो गया होगा।
You cannot make a sprout grow into a giant tree. तो कुछ बनाने के लिए तुम्हारे घर के Nor अंदर can चले you आए. force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. नहीं तो कोई आया था तुमसे मिलने के लिए ना, जो आएगा तुमसे मिलने के लिए वो तो तुम्हें कॉल करेगा. Growth. तो वो तो नहीं होगा कि कोई आया है, Yes, नेबर्स then this is what you चेक would किए, call उनको growth. बैठाए, तुम्हारे घर से चाय पिलाए. Why break into दो, इन दो. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. अब इस पे क्या ही बोले, लोगों का अपना अपना क्या कहते हैं, किक्स है. अभी खुजली कहने के लिए सोच रहे थे, पर खुजली वर्ड गलत हो We're जाएगा. about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later. We have monsters. काहे का मॉन्स्टर. I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend and the other was my child. Why can't your kids Nothing speak? matters as long everything is in. हाँ वो तो है भाई. Because it's just a fungus. I don't want जब my तक सब कुछ presence अपने to जगह पे change or रहेगा, affect तब तक. the original. However, it is ठीक slightly है भाई. different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language. Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. It's Poor people of Kandias, Paimon still call them monsters. My neighbor told me he would clean my house. its name is और क्लीनिंग के नाम पे मेस कर बना के चले गए. गजब I'm भाई. sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Yes, this way. We're almost there. ओके, वो कैरेक्टर है ना, चल जाएगा. एक सेकंड, क्या मैं सब तोड़ दिया, बस इसको तोड़ना भूल गया? नहीं भाई, एक क्वेस्ट का है. It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. I will bring him something for his favorite, from his favorite place. It's the Okay. last form we take when we कतई are हमारे born to जी our भाई life. दयालु इंसान. Paimon doesn't understand. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after Once forbidden cold, now knowledge has a disappeared. kind and humble soul, also the one who makes dad's jokes. They've been tormented जो भी by हो, forbidden बढ़िया है. knowledge अगर for चेंज हो what is गया है sad तो and pitiful. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil,
उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को क्रेडिट देते हो तो चलेगा They भाई। grew everywhere until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with What me. is the dumbest thing you have ever done? But that would mean the effects of forbidden Dumbest knowledge thing couldn't- क्या किए It's okay. वो तो हर दिन ही That's कुछ ना not कुछ करते important रहते हैं। anymore. I just hope that they can all make it back home. जहाँ पर बोलना नहीं चाहिए वहाँ पर It's बोल not देते हैं। right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I managed to bring back I will once make me accidentally that put much my happier. hand in a electric switch when I was 10. I understand. बचपन में Just leave it to us. बचपन में बहुत सारे So कांड you're किए हैं worried भाई। about me. कहते हैं हम भी It's बचपन में funny. बहुत ज़्यादा Forbidden knowledge doesn't exist मतलब क्या anymore. कहे शांत इंसान नहीं थे भाई। It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake. But when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? गंदा कांड किया था। हाँ भाई अगर स्विच बोर्ड पे उंगली घुसा दोगे वो तो गंदा कांड ही होगा भाई। और गंदा कांड तुमने नहीं किया था, तुम्हारे साथ हुआ था उसके बाद जब झटका लगा था। ए पहला ठोके, ए दूसरा ठोके, कहाँ मारोगे? ए इसे कहा जाता है जानबूझ के मार खाना। तीसरा ठोके, अब इससे सपोर्ट लेके आगे है बड़े वाले, आओ। मेरी नाहिदा हटा दिए तुम लोगों ने। Kamisato up. Suiyu. अबे तुम लोगों में वो दम नहीं है। Game's up. Fun's over. Get with me. हमेशा आए तो कोई यूज करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. Still waiting for child invite to his home. I hope that you will be free of this pain वो after तो अभी returning बहुत देर home. है, अगर ऐसा कुछ कांड होता है तो बहुत देर है भाई। Just thinking about how many elemental उसने life इसमें forms जाने have के turned बाद। into tumors of the withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true आज nature कुछ is डोमेन not so करना है। easily affected. इताची भाई हेलो। यारभीस भाई ना भाई, कोई डोमेन तो कर नहीं रहे। अगर आपको करना है तो बोलिए, हम आ जाते हैं। आई कैन डू 3 डोमेन ऑफ योर चॉइस। मेरे चॉइस के डोमेन, अरे आपको क्या चाहिए मटेरियल उसके ऊपर करो। मेरे चॉइस के डोमेन करके आपको क्या But फायदा? I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live आपको in जो it. जो चाहिए आप गेम में आ जाओ, ज्वाइन कर जाते हैं कर। Thank you, Lord. उसके of बाद चलो Dendro. चलते हैं। It Hold on. I think I got something. मुझे ईतो का चाहिए तो चलो ईतो वाले पे। Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave इताची them. भाई हेलो, वेलकम टू It's द लाइव currently स्ट्रीम। unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a लास्ट look. टाइम ईतो के लिए फार्म कर रहा था, कोकोमी का मिल जा रहा था। Okay, follow me. ओ कुछ नहीं कर सकते उस पे भी भाई,
कुछ मांगते हैं कुछ देता है, हमेशा इस गेम में उल्टा कांड ही चलता है, पर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे दे देता है। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब जाके दे देगा भाई। But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. They can be reasonable, as long as we try to communicate. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahira's power if you want to save that fungus. I had glasses when I was 14. ना भाई, आज भी चश्मा नहीं पड़ा जिंदगी में। I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? पापा के भी चश्मा, मम्मी के भी चश्मा, दीदी के भी चश्मा, पर मेरे पे नहीं है भाई। हाँ, बस एक अच्छा आर्टिफैक्ट मिल रहा था, डिफेंस विद डिसेंट सबस्टेट। वो ऐसे ही एक एक करके मिलता जाएगा भाई, वक्त लगता है भाई। इताची भाई हाई लिख के चुप हो गए। Nahira is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws My of teacher time told me so it was easily. because I studied in the dark. काहे अंधकार करके पढ़ाई Then we'll करने have का to मतलब enter with क्या the है risk भाई? of being noticed. We may not be able to avoid a fight. पढ़ाई अच्छी होती है उससे, ज़्यादा समझ में आता है। मैं अगर लाइट ऑफ करके अब मतलब डार्क वाले रूम पे पढ़ाई करूँ तो जिंदगी झंडवा बन जाएगी मेरी। मुझे ऐसे ही साइनस का प्रॉब्लम है, सर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। या आज भी कुछ मॉडरेटर का लोचा हो रहा है मेरे पे। क्या है भाई? Me can't see the seat without glass. Yes, something like that. ना भाई, मैं अगर लाइट ऑफ कर मतलब डार्कनेस पे क्या हुआ? The I only had them for 1 year. Okay. एक साल के लिए चश्मा पहने हो। इताची भाई बिना चश्मा के देख नहीं सकते। मैं कतई इतना ज़्यादा गेम खेलता हूँ, सुबह से काम पे भी पीसी पे ही बैठा रहता हूँ, फिर भी ठीक है भाई। बड़ाई नहीं कर रहा, पर आप ठीक है भाई। वाना हेयर इफेक्ट बोलो भाई। हाँ, पर वो लाइट ऑफ करके या डार्क वाली रूम पे पढ़ाई कहो या मोबाइल लेके बैठा रहने को कहो तो ना भाई, तब सर दर्द शुरू हो जाएगा। एक बार अगर दर्द शुरू हो जाए तो सब कुछ बंद। जब तक ना सोऊंगा तब तक ठीक नहीं होगा। कोई मतलब दवाई मेडिसिन कुछ काम नहीं करता। इन माई फैमिली एवरीवन हैड ग्लासेस। ओके, इन माई फैमिली ऑल्सो सेम भाई। फैमिली पे मेरे पे ही सेम है भाई। Okay. Good luck, Lord of Dendro. गजब। Wow! You really turned into a fungus! It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? My mother and father have them forever. My grandma had it for 2 months. I'll get close to them while you make your way over from above. और मुझे भी जब से याद है पापा चश्मा पहनते हैं, You should be able दीदी to भी identify चश्मा them using पहनती है। elemental sight since they're मम्मी elemental को life चश्मा forms. पहनने के लिए कहा है, पर मम्मी नहीं पहनती। Then, all you have to do दादी is repeat the हमेशा से correct जब answer से in देख your रहा हूँ mind. चश्मा पहनती है भाई। As long as... Okay, got it. Let me lure away the fungi. अब पापा की मम्मी कहो या मम्मी की मम्मी कहो, दोनों ही चश्मा पहनते हैं जब से देख रहे हैं। All right. Good luck, Nahida. Let's go, traveler. क्या हुआ? कुछ नहीं राज भाई। अब क्या फंगस बन के उड़ना पड़ेगा मुझे? तो अपने आप जा रहा है भाई।
I actually had to force my There's a dad to fungus wear infection in the glasses. center there. Doc told him to wear, It but looks he pretty didn't vicious, listen. so I'd better Slept. go around it. It seems they didn't notice me. It seems that कहते हैं जी भाई बाकी सब भी बोल दो कौन सा रूट होगा, एक चांस पे कंप्लीट हो जाएगा. My way through. Wheelie Twilly या This is the spot. Bongo Head. There's several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. अरे यार Come back! I'll spot you if you keep going that way. ऊपर से जाना पड़ेगा. Sorry. That's the only one. Okay. So this is the one. Understood. ओके ये एक ही है जो लेटा हुआ है ऐसे. Nagita? What's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. He I is even like used the resort. techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Just wait for Now it to we wake up. simply wait for it to wake up. Who are you? I apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. सी क्या नींद से उठ गया. ओके रिजॉर्ट जैसे बात करते हैं. हाँ. Yes. Unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. Really? That's great! Home, Dendro Dragon. Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but at Hep, the Dendro Dragon has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live go inside to the Dendro go to the Dragon. chasm after helping the fungi. कहते हैं आपको सब याद है भाई. The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that My God, day there is never one came. funny part, one sad Our part. homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. ओके भाई. I'm still confused. Yes, a very good तब example. चलते हैं देख लेते हैं आप क्या It कह रहे हैं. appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is
that the Dendro dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that a pep has also been contaminated by forbidden हाँ knowledge? डेंड्रो ड्रैगन Yes, नया that ड्रैगन is correct. जो नया वीकली बॉस आया है ओ इताची भाई Dendro? I haven't seen this expression on you before. ग्रेटर A लॉर्ड pep is the most adaptable life form Okay, in the bhai. world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the dragon. I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, a pep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring Raiden- unimaginable Raiden. pain all the while. He's the only one It's without a probably dragon in now. pain as we speak. FF hates gods. Okay. So saving the Dendro dragon is the important thing you need to do. Yes. How could वो I मीम भी forget देखे it? राइडन के पास ड्रैगन नहीं बाकी If the सबके पास है Genshin dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm she sorry. gives a huge You're load right. bomb We don't she have time have to panic. आई Have you two हाँ। ever seen anything like this before? वो तो है राइडन के पास आई है राइडन फॉक्स यूज करती है जापानीज ड्रैगन से ज्यादा फॉक्स पे नाइनटेल फॉक्स भाई Like नारुतो है something उसके from पास our homeland, but I don't know what it सॉरी is. कुड़ामा I'm sorry, our memories aren't very reliable. हाँ तो ड्रैगन किसको चाहिए अगर कुड़ामा है साथ में तो Just as I did before, and see if they can locate your other family members. कुड़ामा द नाइनटेल बीस्ट है उसके पास भाई I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. चाइना ने नारुतो से वो तो दाते भाई एकदम भाई यो Let's wait for their reply again. Though I know waiting can feel unbearable at a दाते time भाइयों like का this. पावर है उस पे काम आ गया था इसलिए बीच में चला गया था कोई ना Thank you. Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. if FF theory is correct then the lighting electro dragon must have I died worry. If waiting, then I hope. नो तो राइडन किसी को भी पेल देती है I भाई understand what you are trying to say. उसके मूड Family के is ऊपर है very important FF is to us. older than No Zhongli matter when we were actually family, it has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to सबसे leave. ओल्डर हमारे Can ट्रैवलर you लोग do हैं यहाँ one पर last thing for it while we wait. Of course, I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. नॉट बाय राइडन भाई तुम ये लिख घुसाओ रिडन लिख रहे हो भाई राइडन को RAI करो भाई मैं तो समझ जाऊंगा लोगों को There are two दिक्कत हो जाएगी things that भाई it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the हाँ मैं floods तो that ऐसे are कहे trying to invade the वो तो area. जानना पड़ेगा जब बाद में जाके पता चलेगा वैसे गेम की स्टोरी जो है बहुत स्लो चल रही है Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. आहा किल्ड हर ड्रैगन एम्ब्लेम वाला आइसलैंड पे उसका वो ड्रैगन नहीं वो बड़ा सांप का है भाई स्केलेटन इताची भाई सांप का है वो और ड्रैगन छोड़ो ना ड्रैगन की जगह दत्त बायो है तो
कहाँ से कहाँ भेज दिए। अभी तो दिए थे। ओके ओके, पानी दो। पानी चाहिए तुमको? ले लो पानी, जितना पानी चाहिए दे देते। Handle the invading plant life. Wildflowers! It wasn't kidding when it said plants were invading. Be still. Whew. That should be all of them. ये आज इसी स्ट्रीम पे ही खत्म कर दो। रुको रुको, हाँ वही तो ड्रैगन था वो। सॉरी, सांप था वो। But it doesn't seem like there's too Apep much we is can do one of the until dragon we who receive work some with leads. primordial Can you tell us one. about the Hydra dragon? We don't know कियाना के anything साथ। about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? जिसको मैं इन फ्यूचर C6 करने वाला हूँ। Work or created, you can put it in any way you want। बहुत ही क्वेस्ट है, आज इसे स्ट्रीम पे ही खत्म कर दो। करते हैं। आई थिंक आई शुड स्टॉप स्किपिंग एवरी क्वेस्ट। कम से कम जिस क्वेस्ट पे वॉइस है ना भाई, उन क्वेस्ट को धीरे धीरे करना भाई। कतई एनिमे जैसा लगता है, बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। और वर्ल्ड क्वेस्ट पे तुम स्किप कर सकते हो। Apep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. You should take As far as I know, 45 Apep more had been minutes slumbering in the desert, to and finish King this Deshret quest. had taken a और great 45 interest in minutes। it. Maybe this is why चल Apep जाएगा। was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. Take it easy. Thank you, Lord of Control. Family hat. ना आई थिंक 35 शुड बी मोर देन इनफ। Family वो तो ड्रैगन को पेलने के ऊपर वक्त मतलब समझ पाएंगे ना, कब तक ड्रैगन को पेल देते हैं। like our family. That's not a वैसे pun on that. वेराइटीज ड्रैगन मिल जाएंगे आपको एल्डन रिंग पे। एजी भाई ट्राई किए हो? Doesn't matter. Family likes me. एल्डन रिंग कभी रिजॉर्ट फंगस। doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. ओ You भाई, place importance on appearances, but we do not. फास्ट इन द फ्यूरियस जैसा We डायलॉग। find the फैमिली, experiences, knowledge and connections we've यू made to be वोंट more फाइट द ड्रैगन। नो आई हैवंट। These are all ट्राई things करके that देखो are भाई। more reliable than mere जिस दिन external आप उस गेम को appearances. खत्म कर दोगे, यहाँ These के are the एबिस कुछ नहीं fruits of लगेगा time आपको। and the essence of what it means to grow. हो सके तो कभी ट्राई करके देखो एल्डन रिंग। Looks can always change, so what's inside of us is more important. मैं अभी भी एटलीस्ट It wouldn't matter. Paimon would still be able 900 to बार के recognize you आसपास right मरा away. हूँ उस गेम में। Oh, हर दिन 50 बार 60 बार ऐसे ही मर जाते thank थे। you. कहते बहुत हार्ड गेम है भाई, ट्राई करके देखना। Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow, and if no one knows how this crystal works, then Apep may be in danger. Sorry.
It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru. A murky place that no one can return from. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge. I don't want but spoilers, but still what if it want can to be watch the converted to a stream. different form? I'm sorry if I'm suddenly not Arey making bhai. any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. You are Annabelle. कहे Annabelle? हो गया, कुछ स्पॉइलर नहीं दिए हम. किसी क्वेस्ट पे फंस चुके हैं कह रहे हैं. अब कौन से क्वेस्ट पे फंस चुके हैं, किस लिए मैं ये क्वेस्ट नहीं कर सकता? If you are unable to reach the destination, please complete the world quest. Perils in dark. What? What? एक का है. एक कहाँ पर फंस गए हम? Head to the deepest part of the chasm. Chasm open करो. ओके ओके. गली से निकल जाएंगे. नो यू कैन गो. सॉरी मैंने चैट बहुत ज़्यादा मिस कर दिए. एनी गोवा स्पेशलिटी आई शुड ट्राई. नहीं पता, मैं कभी भी गोवा गया नहीं. मैं सच बोले तो कहीं ज़्यादा घूमे भी नहीं है भाई. सबसे ज़्यादा जहाँ पर गया हो चेन्नई पापा को डॉक्टर दिखाने. हर साल 2 बार 1 बार. तो घूमना मेरे नसीब में नहीं था भाई. अब तक तो नहीं है. फ्यूचर का पता नहीं. Wouldn't it already have become the withering like the others? There is Go a to the chance that we could avoid Celestia. that नहीं. end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the abyss. It once repaired the अगर rifts to टेलीफोन that पॉइंट long ना ago. होता, अगर हम लोगों को It has the नॉर्मल ability चलते to चलते जाना purify and पड़ता, stabilize powers that shouldn't exist in कितना Japan. वक्त लगता. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep. It's just like soap bubbles that rise to the water surface. It has turned into the fifth. Another strange metaphor. But Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the वैसे apocalypse फ्लिंट was भाई, altered by the एजी power भाई, of the giant आप लोगों को spike पता है यहाँ पर remaining जो within the oozing क्या filth. कहते हैं, चौसाम के अंदर जो Yes, लड़की and it रहती है shouldn't be जिसको far from मतलब Let's जिसकी go into तबीयत the ठीक नहीं रहती, आप लोग एक साथ नॉर्मली एक्सप्लोर करती है, उसका होता क्या है? वो कतई जिंदा भी है या मर चुकी है? क्योंकि मुझे वो जगह समझ में नहीं आया. मैं प्रीमोस के चक्कर में था, मैंने देखा नहीं था. उसके बाद वो लड़की मुझे कहीं पर भी ना मिली. उसको हुआ क्या? क्या वो मर गई या वो जिंदा है? कुछ नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि उसकी बॉडी तक ना मिली, कुछ ना मिला. गई तो गई कहाँ? कहते मैप से, गेम से गायब. ओ एनपीसी मोस्ट प्रोबेबली मर गई. लोकेशन अननोन. बहुत ज्यादा खास रही थी पहले. चजाम के अंदर है तो टॉर्च जला लो.
बस 1 मिनट ये आ गया है, इसको भर लेते हैं भाई। मार्क्स का टुकड़ा बहुत है मेरे पे, लगा दिए। Stand with me. चलेगा, गरीब को कुछ पैसा तो मिला। जिंगोन या एशिया, हाँ ऐसा कुछ नाम था। द वन हु अनलॉक द चाजा मुइथास, एकदम उसी की बात कर रहे हैं। उसका हुआ क्या? जा कहाँ रहा हूँ? नीचे जाना है। गई तो गई कहा। एज मच शी इजंट डेट लेफ्ट द वर्क फॉर बीइंग, द वर्क ऑफ बीइंग ए, It's over there. अभी गिर के मर जाता। Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep. हाँ, लगाते हैं You. तुमको, We'll just use लगाते the हैं तुम oven लोगों stone on को। the oozing concretion. आओ पंगा लेने के कांड दिखाते हैं। Oh, we finally managed to rescue it. हर किसी को कुकी हिल कर रही है, गजब। From the prophecy. मिलेटेड वो चजाम का अंदर खो गई Light. थी या Wait. एजी इन ए फॉलो अप क्वेस्ट वी गेट टू नो द मिलियट इज सर्चिंग फॉर हर इन कैजम। शी वेंट डीपर दैट they could access. What's going on? Didn't the Hida say it was purified? और लड़की का नाम क्या था वो भी अगर मिल जाए, बाकी तो निकाल ले। Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, एक सेकंड, it is इताची भाई still a उसका form नाम of लिखे, रेस्ट इन dangerous पीस। power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long ये time. चाइनीस नाम बहुत ही मुश्किल है। But we still have tons of questions we need to जीकोंग ask. I जो should भी be है, able to purge जी it से with नाम है ना, elemental जी power. याद रहेगा। But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Oh, yeah! You said that the elemental Then power could in be the killed crystal by was killer, identical to theirs. killed, been killed, You want to use its have power. killed, been killed by the Black Knight The Lord of Serpent. Dendro What seems matters? hesitant. I too would advise caution. It's ना, risky matter to तो use कुछ its नहीं power करता। without fully understanding बस its शज़ाम पे intentions. सबसे ज्यादा फंसा पड़ा था मैं। This no good, that no good. Save lives, important. Yes, I understand, but this is our only तो chance इसलिए to पूछे। return home. We cannot afford to be careless. It's okay, there's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. She could have turned into the filth Lord of too, Dendro, I guess. and you others. देखना पड़ेगा, How long? वही तो जानना है How उसका long हुआ have क्या। I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. इसलिए मैं मतलब क्यूरियस हूँ क्योंकि जब मैं YouTube या ये सब कुछ नहीं करता था, एक वीडियो देखा था गेंशिन के, अब कहाँ था, कौन सा जगह था याद नहीं, जहाँ पर उस लड़की का एक नोट पड़ा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था मे बी वो अपने आखिरी सांस से लेते वक्त वो नोट लिख के छोड़ी थी, उसके बाद उसकी बॉडी भी मिसिंग है। After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely अब ना वो यूट्यूबर का eradicated, वीडियो मिला, and that relevant memories will become unstable.
ना ही Even और you कुछ। couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. हाँ वो तो पढ़ लिया। However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. शज़ाम है ना, शज़ाम पे तो अंधकार ही रहता है भाई, अंधेरा कायम रहे। किल 20 एरिना भाई। As you can see, वैसे वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम भाई। I understand, and I'm sorry, but can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It He is mimics how talking the about Dendro Celestia dragon's nail, heart that's of why. Oasis operates. अभी The Dendro dragon विकड़ा has been लाके tormented by the भूल को apocalypse for far too ओके long. भूत को बोतल में It बंद too कर is लेगा। nearing the end हाँ of भूत its नहीं है, power. बस अंधकार है। However, if you are able to reactivate its heart of Oasis, वो भी क्या दिन using थे, the विकराल। fire seed, then the Dendro dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the heart of Oasis is a Pep's source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the fire seed to save me? Mm-hmm. Why? What's wrong? That's... never mind. जजंतरम It's not your fault. ममंतरम। You didn't know. हाँ भाई Fire याद है seed भाई। contains a high पुरानी याद concentration है। of elemental power inside of it. It's very powerful yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside I from can't being make able to sense heal the of Dendro Vargas dragon, later. the Cappuccino fire seed must can have also resonate with the heart had of ulterior Oasis. motive In behind other helping words, him you'll be able to in find his the expedition. Dendro dragon पहले तो by उसकी बैक स्टोरी following जानना the पड़ेगा जी guidance of भाई। the fire seed. कैपेचिनो के हमारे But you should hurry. There's कैप्टिनो little जो भी time है, to मैं तो उसको waste. कैपेचिनो ही कहूँगा, जिसको जो समझना है समझ लो। Forget कैपेचिनो about me. कैपेचिनो You को should hurry home now. भाई जानना पड़ेगा उसकी Everyone बैक is स्टोरी। returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to जी save the Dendro दागी dragon. सवार Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing उस that they बंदे will को कॉफी return बना home. दिया रे बाबा। Hey, wait! It turned into oozing filth. गजब। Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned It to turns its original elemental form to and is becoming memory. one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter.
and our home has been saved. दिल There is nothing more टूट important गया, than मुझे being छोड़ together गया, with वो family. पिछले महीने की 26 को दिल में मेरे दर्द है, दर्द डिस्को। क्या ही कह रहे हो भाई? सुमेरु पहुंच गया है यहाँ पर, जगह भी पहुंच गए। कतई तेज चल रहे। डेंड्रो ड्रैगन इनकमिंग, ब्रेकअप। It's not much further. Follow me. We're close now. Take it easy. I can feel its नहीं, power वो गाने की lingering and lyrics है shifting शायद। around us. Sometimes it feels distant. एपिक सीन and other इनकमिंग। times ओके भाई, it seems एपिक। close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there! We found it. A pet, the Dendro Dragon. I knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pet, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, Brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go. For only a moment. Foolish Brewer, you will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the Seven Nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. Okay. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah! What is that? Hyman's never seen that before! It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature say. The composition of their elemental power is Yeah, please identical use to the- ours. Please, the In other second words, strongest being we they're have residents of our homeland. up until now. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? Puny छुटकी। This is also a form of adaptation, Second to Sasti. although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made छुटकी it को out प्यूनी of the बोल दिए। Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them?
No one can express from escape the one and only Timmy. They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that Almighty, remains are the the instincts to strongest, survive and the search for wisest. energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. In his dream, of course. How would it become एकदम the same if forbidden knowledge was allowed to rampage Timmy. across to that? Like fish struggling on land, unable to find a single Puny puddle god. of fresh water in the entire world. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. स्पॉइलर खत्म होगा तो बताना. का ही लड़े तुम्हारे साथ. Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. What do you say, Sensei? Paimon is us. Look at her legs. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert This to their candidate elemental flag to form? Nahida will Years of die torment by does not turn sacrificing them into their herself current for state. Their external form you has already become their have in shackles. story. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes There might be some not sacrifice just incoming. us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried Zhongli that might it'll become die. unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. यार दोनों में से कोई नहीं मरेगा. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I You hope to said use you and your you are born experience to and try remember. speaking to a pet again. We'll remember. After all, that He giant couldn't break Dendro the dragon is contract, also but your maybe he family. will break it Maybe and you'll tell us. listen. I will stand with you, Lord of Dendro. फिर भी इनमें से कोई I नहीं will मरेगा. never forget your kindness. Yes! Thank you. Alright, here it goes. और मरेगा तो हर कोई मरेगा. Family. We will all be able to go home soon. Whoa. It's shining now. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Can't say that 100%. Yes, finally. वो तो देखा जाएगा भाई. We अभी can go कैसे home. कोई कुछ कह दे हम This is लोगों the में से. last part. Let's go. हाँ तो लेट्स गो कहे तो चलो. उस साइड पे इताची भाई ने लिखा है आई लेफ्ट द स्ट्रीम. स्पॉइलर खत्म होगा तो बताना. भाई कितने दूर. यहाँ से जाना वेस्ट रहेगा. बड़ा सा ड्रैगन. कौन देख लिया मुझे. और देखने का फायदा भी क्या है.
इतना बड़ा ऐप है, यहाँ पर कैसे मतलब छुप सकता है भाई? साइड दो, साइड दो। Take it easy. एफएफ को फोड़ने के लिए आ रहे हैं भाई। ओके, मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया। हम सॉरी, इतना अंदर नहीं जाना चाहिए था, होता है कभी कभी। This cave is Celestia is above Could the this be fountain, where the so Dendro Dragon we'll lives? finally take a deeper dive in Genshin lore around 4.0. Its guardian. They killed playable character in Honkai. Honkai पे ठीक है, Yeah. Who knows गेंशिन what's पे ना inside चले। that cave? जोंगली के फैन Our फॉलोइंग goal फोड़ is देंगे not भाई। only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That would जोंगली be के बहुत ज़्यादा impossible if we फैन can't फॉलोइंग get है it to भाई। cooperate with us. But how are we gonna do that? भाई It doesn't सामने के seem to want to help कैरेक्टर at all. 60 FPS पे, I'll पीछे see के what I can कैरेक्टर do. 30 FPS पे। Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the Its world guardian, and it's its orders. moving. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has Valentia lost its has the meaning. most death Rather than flag. continuing to fight, you should consider the life you've produced. वही तो बोले, अगर मरेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर मरेंगे और गेम उल्टा, मतलब No रिएक्शन response. उल्टा बन जाएगा तब Your गेम के। eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. एनपीसी मरना और प्लेबल कैरेक्टर मर जाना बहुत फर्क है भाई। Why you want to survive and why you're so vengeful. Please keep everyone safe and send us I to the really homeland. want Genshin to take a dark turn in main quest. Kaya will probably get killed by Dane. काया के भी बहुत सारे फैन हैं भाई, बहुत लोग काया पसंद करते हैं। Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd he go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I Let's wouldn't see worry who too कैसे much. The traveler's करेंगे no pushover. आगे की स्टोरी। Paimon knows that. हाँ वो तो देखना पड़ेगा भाई। मर बोले तो थे भाई, अगर मरेगा तो बहुत सारे कैरेक्टर है जो मरने मतलब मर Let's सकते हैं hurry. भाई। He might be just up ahead. एक दो कैरेक्टर नहीं है भाई। नाहिदा लेके चलना है, अब ना कहो सिर्फ नाहिदा से कांट करने हैं मुझे पूरे टीम चाहिए मेरे। What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it. We still need to find the traveler. Alright, hang on. He will have your team. तब ठीक है। Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it. I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case,
There's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. Okay. So all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that a Pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida! The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. अभी भी खत्म नहीं हुआ इताची भाई. अभी लोड बॉम्ब चलेगा. 5 मिनट बाद आओ. You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. रेजर फंगस भी चला गया रे. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! अब इसको फोड़ो टाइम. To imagine such growth,
अभी फोड़ते हैं, रुक रुक जा मुन्ना। It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. Thank you for protecting your elemental power. Goodbye. We may live together. I will meet her no matter how long it takes. This is the agreement we made. Hey! Dissipate! ये बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, एक दो आया करे नहीं भाई, इनको बहुत ही ज़्यादा भेजना है एक साथ। अभी इसको चलो कांड तो कर दिए, अबे ऊपर जाएगा फिर से वो आएगा। लास्ट टाइम मुझे पेल दिए थे फिंड भाई के वोल्ट पे, मेरा आया तो मरा था, सॉरी आया तो नहीं, बेनेट मरा था। भेजो दूसरी बार, इस बार फोड़ ही देंगे। नॉट येट। हाँ लास्ट टाइम फाइट है ना। I see everything. Share my knowledge. अब तुमको खा दिए हम। तुम गलत से कांड कर दिए मेरे साथ, लास्ट टाइम का बदला। Hey! Can you hear Paimon? The weakest was in the immune system of That your Epic. word didn't matter, right? And let us know that you're alright. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. That's different! There are dialogue in story. Won't ever be the same. अब जल्दी मर जाएगा तो मेरी गलती क्या है? उसको ज्यादा हेल्थ देना चाहिए था गेम में। That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Pep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my The hatred weekly for boss that usurper is from the beyond the immune heavens still system of stirs Epic. deep within me. इम्यून सिस्टम ओके, Destroying एपेप you से and फाइट नहीं your हुआ। people serves me no purpose. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Heesh! Who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there That's is why one it's last called thing Guardian. I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles.
The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape Not the a traveler, world, not any Archon can while defeat the Epe losers for must now. turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides. Not the even traveler, after the traveler death of किसको the हरा Dragon पाए King. भाई? As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. That's so. Sand dunes arose where there was What only is forest. why economia sunk And in it the was as sea? if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. Oh भाई. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate 45 would minutes से ज़्यादा हो belong गया. to me. At that time, I still harbored deep regrets. Not during By the the War time the of Dragon Dragons. King finally returned, There are 7 the original world dragons had created by irrevocably Primordial changed. 1. Some of the dragons have grown close to your kind and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believe that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. ओके कंप्लीट. ये तुम लोग ड्रैगन ड्रैगन का किए जा रहे हो? कितने लंबे सारे लिख दिए. इसने ड्रैगन बनाया, उसने नहीं बनाया, पर उसने सेलेस्टिया बनाया. Still in one piece too. सबसे क्लोज है ह्यूमन के डेवलिन, क्योंकि उसका मालिक भी गजब का है. भेंटी द दारूबाज. It's not as Not ruthless as it 100% was pure. before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it अभी more भी open to चलेगा? reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again,
They've It is lost their far memories greater of their than any journey archon. and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! How are we going to explain all the complicated things that happened? कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ से? ओके, एक बेटा और एक दोस्त, अब उनको जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। They're still here! Have they really been waiting here all There this is a time? world quest after this with They're Nahida. back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It's said that Noor is its most important family member. That's your name, isn't it? This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again. Bug or someday. something. I'm sure I didn't have any dialogue during this. कंप्लीट है। चलो आज के कांड कंप्लीट। जारविस भाई ऑनलाइन, जारविस भाई ऑनलाइन। इनको कुछ डोमेन करना था ना, तो बाद में देखा जाएगा, पहले आज की लाइव स्ट्रीम तो ऑफ कर दे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव स्ट्रीम गाइज। अगर हो सके तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, और बाकी को बस लाइक करने के लिए कहूँगा। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, हो सके तो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं कल। गुड नाइट फ्लिंट भाई, गुड नाइट एजी भाई। कल शाम 7 से 7:30 बजे के आसपास, तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, शुभ रात्रि गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव स्ट्रीम।